Dear students, welcome to this class of mine. Today I will explain to you how to do a very good note making. You will get one passage in reading section of your question paper. The word limit of this passage is about 600 words. It is a very creative exercise. If you do it correctly, in a proper manner, and you present this note making in a beautiful way, then you can get full marks also. You will get a question like this. The nature of the question will be like this. On the basis of reading of the passage, make notes on it in points using subheadings, points and subpoints. Also use minimum 4 recognizable abbreviations. Also supply a suitable title to the passage. This is A part of this question and it will carry 5 marks. B part, write a summary of the passage in about 80 words. Sometimes the title is asked in B part. This B part carries 3 marks. So you will get this passage of 8 marks in total. Now, at the time of doing note making on the given passage, you have to keep certain important points in your mind. I am going to discuss those points. I am going to explain those points in detail. The first point is keep a pencil ready in your hand and start reading the given passage slowly and attentively. Keep a pencil ready in your hand and start reading the given passage slowly and attentively. The second point is, keep underlining the important sentences, phrases and words in the first reading itself. What is important here? Keep underlining. Start underlining the important sentences, important phrases and important words in the first reading itself. If you think, let me read the passage casually, then in the second reading I will underline these important sentences, phrases and words. No. In the second reading, most of the sentences will look important to you and you will get confused. So, in the first reading itself, you keep underlining these important sentences, important phrases and important words. Now the third point, try to understand the topic of the passage to make it clear what it is all about. Try to understand the topic of the given passage. Try to know the subject of the given passage, making it clear what it is all about. Try to know the subject, try to know the topic of that passage. Once that topic or the passage is clear, then you will be able to make very good subheadings and points.
The fourth point, choose the linear form of chart to indent and enumerate subheadings, points and subpoints, since the linear form is the easiest of all the charts. There are 3 or 4 kinds of charts one can follow, but always try to choose the linear form of chart. What is the linear form of chart? You will have to indent and number your points in the form of this way, one below the other. First you will write title. This is A part. Give number 1 for first subheading. Then you make points, point 1, point 2, point 3 under that subheading. All these points are related to this subheading. Then you go to the second subheading, write number 2 subheading, then point 1, 2, 3, 4. The number of points will vary. Maybe 2 points, there may be 3 points or 4 points or sometimes 5 points also, according to the nature of that paragraph in that given passage. Then third subheading, point number 1, point number 2, and now suppose that third para carries a subpara of 2 or 3 lines, and that subpara contains 1 or 2 important points, then you will write subpoint 1. So keep this thing in your mind. These 2 points belong to this subheading, and this subpoint belongs to this point. This is the relationship, very, very important. Again, I am telling you, these 2 points will relate to this subheading, and this subpoint will relate to this point. Then again point, third point. Now, number 4, subheading, point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. So this is the linear form of chart when you indent and give numbers to your points in one straight line, one below the other. That is your linear form of chart. So this is the easiest of all charts. So almost all the students or teachers, so to say, follow this linear form of chart. Now the next point is maintain a uniform symmetry among subheadings, points and subpoints to present the overall note making impressively. Very important to note. Maintain a uniform symmetry. What does it mean? It means that 1, 2, 3, 4, these numbers of subheading must come in one straight line. It should not be like this. Number 1 is going right side, number 2 is left side. No. Exactly one below the other. Similarly, you will leave this much gap, right? Then you will start writing point 1, point 2, point 3, and you will have to maintain this symmetry. This is important, right? Points will come below points. Subheadings will be in a straight line, one below the other. Similarly, points, similarly subpoints, but you will have to maintain this distance, not exactly below this subpoint. You will not start writing point from here. Give this much space and then start writing point. So this kind of presentation, this kind of symmetry is very important.
because this presentation needs beauty. This presentation should be good just to impress your examiner. Once your examiner is impressed, you can get very good marks or full marks even. But there should not be any overwriting and scratching. So this is the way you form a linear chart. You indent and enumerate your points. So all the points are complete. I will tell you many more important points later. I will discuss. They are also very important, which you will keep in your mind at the time of doing note making. Dear students, अब मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने का प्रयत्न करूंगा कि एक अच्छी नोट मेकिंग कैसे की जाती है। आपको एक रीडिंग सेक्शन में एक पैसेज मिलेगा जिसकी वर्ड लिमिट अबाउट 600 वर्ड्स होगी। इस पैसेज के में इस क्वेश्चन में रादर दो पार्ट्स होंगे। पार्ट ए की लैंग्वेज होगी ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग ऑफ द पैसेज, मेक नोट्स in points using subheadings, points, subpoints. Also give minimum 4 recognizable abbreviations. Give a suitable title to the passage. So this will be your A part. A part 5 marks का होगा। B part में write a summary of the passage in about 80 words, और sometimes title भी B part में पूछा जाता है। इसका मतलब वो 3 marks में इंक्लूड होगा। फिर आप टाइटल A part में नहीं देंगे। फिर टाइटल समरी लिखने के बाद समरी जब कंप्लीट होगी उसके नीचे टाइटल TITLE कॉलन देंगे, देन यू विल राइट द नेम ऑफ द टाइटल। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, पॉइंट्स हैं जो कि आपको माइंड में रखने हैं एट द टाइम ऑफ डूइंग दिस नोट मेकिंग, वो क्या है? अब मैं आपको वो पॉइंट्स बताता हूं। पहला पॉइंट है, अपने हाथ में पेंसिल रेडी रखिए और पैसेज को धीरे और अटेंटिवली, बड़े ध्यान से उसको पढ़ते जाइए, स्लोली। सेकंड पॉइंट है, कीप अंडरलाइनिंग द इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वर्ड्स इन द फर्स्ट रीडिंग इटसेल्फ। ये बहुत जरूरी है। जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं उस पैसेज की, उसी टाइम जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको अंडरलाइन करते जाइए फर्स्ट रीडिंग में ही। अगर आप सोचेंगे नहीं मैं तो सेकंड रीडिंग में करूंगा, ठीक है, पहले फर्स्ट रीडिंग में कैजुअली कर लेता हूं, तो सेकंड रीडिंग में मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस विल लुक इंपॉर्टेंट टू यू और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, फर्स्ट रीडिंग में ही आप उनको अंडरलाइन, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, वो आपके माइंड को क्लिक करेंगे, उसी टाइम अंडरलाइन कर लीजिए। थर्ड पॉइंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ द पैसेज टू मेक इट क्लियर व्हाट इट इज ऑल अबाउट। एट द टाइम ऑफ रीडिंग द पैसेज ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस समय समझने की कोशिश कीजिए कि इस पैसेज का सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, ये किसके विषय में है। जब आपको ये क्लियर हो गया कि इसका सब्जेक्ट ये है, टॉपिक ये है, फिर आपको सब हेडिंग्स और पॉइंट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छी सब हेडिंग्स बनेंगी, अच्छे पॉइंट्स बनेंगे। फोर्थ है, चूज द लीनियर फॉर्म ऑफ चार्ट टू इंडेंट एंड enumerate subheadings, points and subpoints, since the linear form is the easiest of all the charts. अब आपको चार्ट फॉलो करना है,
अपने नंबर्स को इंडेंट करने के लिए और उनको उन नंबर्स को नंबर देने के लिए 1 2 3 4 5 लाइक दिस, तो कौन सा चार्ट आप यूज करेंगे? वैसे तो फ्लो चार्ट, पाई चार्ट, ट्री चार्ट होता है, लेकिन लीनियर चार्ट सबसे आसान होता है। हर एक चार्ट में सबसे आसान चार्ट लीनियर फॉर्म है। वो लीनियर फॉर्म क्या है? वो ये है। पहले ए पार्ट लिखेंगे फिर टाइटल, ये लीनियर फॉर्म है। सब हेडिंग 1, देन यू विल राइट सब हेडिंग, बिलो सब हेडिंग यू, इतनी आपको स्पेस छोड़नी है, फिर आप पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 देंगे। ये स्पेस जरूरी है, आप बिल्कुल इसके नीचे से नहीं लिखेंगे पॉइंट। एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर सेकंड सब हेडिंग, फिर उसके नीचे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, फिर एक लाइन छोड़िए, फिर 3 सब हेडिंग, पॉइंट, देन सब पॉइंट। इफ दैट पैरा कंटेन्स एनी सब पैरा, कोई उसका एक सब पैरा है 2-3 लाइंस का, और सब पैरा में कोई पॉइंट है या पॉइंट्स हैं, तो उनको सब पॉइंट के रूप में आप लिखेंगे। फिर पॉइंट आ जाएगा अगर कोई पॉइंट है। ये ध्यान रखिए, रिलेशनशिप क्या जरूरी है। ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये सब हेडिंग से बिलोंग करते हैं, और ये सब पॉइंट किससे बिलोंग करेगा? इस पॉइंट से। हमेशा ध्यान, ये जो रिलेशनशिप है, ये बहुत जरूरी है। ये सब पॉइंट इस सब हेडिंग से रिलेट नहीं करेगा, ये सब पॉइंट इस पॉइंट से रिलेट करेगा, और ये दोनों पॉइंट इस सब हेडिंग से करेंगे। ये ध्यान रखना जरूरी है। फिर एक लाइन छोड़िए, 4 सब हेडिंग, 4th पैरा हो सकता है उसमें सब हेडिंग होगा 4th में, क्योंकि इस पैसेज में ज़्यादातर 5 और 6 पैराज होते हैं, मोस्टली 5 पैराज, 1 या 2 सब पैरा हो सकता है। तो नंबर 4 सब हेडिंग, पॉइंट 1, पॉइंट 2nd, 3rd, 4th, ये पॉइंट्स का जो नंबर है वो वेरी कर सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो ये लीनियर फॉर्म ऑफ चार्ट है जो स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, टीचर्स भी फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मेंटेन अ यूनिफॉर्म सिमेट्री अमंग subheadings, points and subpoints to present the overall note making impressively. Very important to note. What is this symmetry? What is the meaning of a uniform symmetry? See, 1, 2, 3, 4, they should come exactly one below the other in one straight line. ये नहीं कि 1 इधर जा रहा है, 2 इधर जा रहा है, नहीं, ऐसे नहीं, लाइक दिस आई विल लीव स्पेस, पॉइंट्स विल कम इन वन स्ट्रेट लाइन, वन बिलो द अदर, एक दूसरे के नीचे आएंगे पॉइंट्स, वो भी एक स्ट्रेट लाइन में। ऐसी सब पॉइंट्स की ये लाइन होगी। तो ये एक सिमेट्री है जो यूनिफॉर्म आपको मेंटेन करनी है। एस के नीचे जो फर्स्ट लेटर है सब हेडिंग का, दूसरे सब हेडिंग का भी फर्स्ट लेटर, ये एक लाइन में, ये सब एक लाइन में होने चाहिए। 1 2 3 4 5 ये सब एक ही स्ट्रेट लाइन में, वन बिलो द अदर। ये बहुत जरूरी है क्योंकि प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है नोट मेकिंग के अंदर। अगर वो प्रेजेंटेशन अच्छी है तो आप अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करेंगे और इम्प्रेस करते ही आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और ये भी ध्यान रखिए कि नोट मेकिंग में ओवर राइटिंग, स्क्रैचिंग नहीं होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है। जितनी प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होगी, जितने सब हेडिंग्स और पॉइंट्स आपके अच्छे होंगे, उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे और फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा, उनको एक्सप्लेन करूंगा। इफ देयर इज एनी फिफ्थ सब हेडिंग, you will write number 5 here, then subheading. Then you will make points related to this subheading, Point 1, point 2, point 3, like this. These 3 points
there may be 4 points or 2 points. These points will relate to this subheading. If there is any subpara of 2 or 3 lines, or if you find any point or points in that subpara, so you will write subpara, any subpoint like this. This subpoint will relate to this point, remember it. This subpoint will not relate to this subheading. This will have relationship with this point. Now, this points making is complete. Then you will make a box. You will give this heading key to abbreviations. Then you will make 5 or 6 abbreviations which you have used at the time of making these points. So you will mention those abbreviations here. For example, development, DEVELT, development, info, information, DD, Doordarshan, WHO, World Health Organization, S2O, water. I will tell you later how to make these abbreviations. Now, this A part will carry this much. This A part will carry 5 marks. Then you will write B. Then you will start writing summary straight away. You don't have to write the spelling of summary, SUMMARY. No, don't write. Start writing the summary straight away. Now, some students feel difficulty as to how to start writing this summary. You can just go through the first sentence of that passage and get a cue from the first sentence itself. That will give you a hint to start your summary. Once you have started writing that summary, you put that passage away. Then you will write the summary on the basis of these points. Right? You will have to keep this thing in your mind. If title is to be given in B part, then what you have to do? When summary is complete, you write below summary title and then you write the title of that passage. This is the way you will make points. You will do this note making. Now, I tell you some other important points which you have to bear in your mind. Some of the points I have already told you. Now there are many more important points which you will have to remember. The first point, reduce the underlined important sentence into a point. Very important. The sentence which you have underlined in the passage, don't write the complete sentence or part of the sentence. You reduce that sentence into a point. That is very important. If your grammar is strong, if your vocabulary is very good, then you will find no difficulty. The students who have a poor knowledge about grammar or average vocabulary, they find difficulty. Now the next point is, never begin the point using helping verbs like is, are, am, was, were, has, have. No, never, never. If you start your point with these helping verbs, it means you have written the predicate of that sentence. Predicate can never be a point. Similarly, you don't have to use modal auxiliaries. These things like can, could, should, must, will, dare, have to, may, might,
or to never. Then other main verbs telling tenses, I mean. Try to avoid all these things. If you use these helping verbs, modal auxiliaries and main verbs, that will not be a good point. The next point, try to begin the point with an adjective or noun or both if possible. Always try to begin your point with a noun or an adjective or both if possible, I mean. Because that adjective heightens the meaning of that noun. So if you have a good knowledge of grammar, then you will have no difficulty in making these points. The next point, use recognizable abbreviations. The abbreviations with which readers or people are familiar. The next point, very important. Now, there are two ways of making abbreviations. There are two ways of making abbreviations, keep it in mind. The first way, take the first few letters and the last two or three letters of the word, join them. For example, breath. Two letters from the beginning, BR, two letters from the end, TH. BRTH. BRTH has become the abbreviation of breath. Another example, expression. EXPRE, then N from the end, EXPRN. This has become the abbreviation of this expression. So take the first few letters and the last two or three letters of the word, join them and you make the abbreviation. The second way of making an abbreviation is take only first few letters of the word. For example, enthusiastic. I have taken ENTHU, 5 letters from the beginning, enthu. This has become the abbreviation of enthusiastic. See here, development. DEVEL. These letters from the beginning and T from the end. Join them. This has become the abbreviation. Information, 4 letters from the beginning. This has become your abbreviation. Right. Use universal abbreviations such as UNO, United Nations Organization. For United Nations Organization, UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations. These are universal abbreviations with which everybody is familiar. Use universal symbols like is less than, greater than, is equal to, that is, at the rate of, and, etc. Then you mention in your this T2 abbreviations chart. The last point, avoid examples, repetitions, unnecessary figures. Avoid these examples and repetitions. If one point is being repeated in the passage, avoid that, I mean. Unnecessary figures, I mean, are not required. This is the way how to do this note making. Means A part. In B part, you don't have to use any abbreviation, remember it. Don't use any abbreviation in summary. And now, I'll tell you one thing important. The number of the words you have used
in making these points, the number of those words should not be more than 70 or 75. Because you are supposed to write the summary in 80 words. If you make points in 100 or 125 words, the summary will exceed more than 80 words. You will lose marks. So, at the time of making points, you have to keep this thing in your mind. That is why I told you, always try to begin your point with noun, adjective or both. I mean. That way you can restrict yourself to the number of 70 or 75 words. This is the proper way of making a note making. No overwriting, no scratching. You have to present it in a beautiful way. Dear students, अब मैं आपको हिंदी में समझाने का प्रयत्न करूंगा. अगर 5th सब हेडिंग है पैसेज में, तो आप 5 नंबर लिखेंगे, फिर सब हेडिंग लिख देंगे. फिर उसमें जो भी 2-3 पॉइंट्स हैं, लाइक दिस पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इफ 4 पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं. और कोई सब पैरा है रिलेटेड टू दैट पैरा, वो सब पैरा 2-3 लाइंस का है, तो उसमें 1-2 पॉइंट मिलता है, तो सब पॉइंट लिख दीजिए. ये ध्यान रखिए, ये पॉइंट्स इससे सब हेडिंग से बिलोंग करते हैं, ये सब पॉइंट इस पॉइंट से बिलोंग करता है. ये ध्यान रखिए, ये रिलेशनशिप है. जब पॉइंट्स यू हैव मेड बना लिए हैं, अब एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें की टू एब्रीविएशंस हेडिंग देंगे, जो एब्रीविएशंस आपने पॉइंट्स बनाने के टाइम पे यूज की हैं. 5 या 6 बनाइए, ज्यादा बनाएंगे आप ही का टाइम वेस्ट होगा. फिर ये पहले एब्रीविएशन लिखेंगे, किस वर्ड से बनी है वो वर्ड लिख देंगे. और ये ध्यान रखिए, जो डैश है ये थोड़ा इक्वल साइज के होने चाहिए, एक बड़ा एक छोटा ऐसे नहीं होने चाहिए. ठीक है. एब्रीविएशन के बाद डॉट लगा दिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए. ये आपका ए पार्ट पूरा हो गया. ये ए पार्ट पूरा हो गया, जो 5 मार्क्स का होता है. अब आप समरी लिखेंगे, बी पार्ट डालेंगे और समरी शुरू कर देंगे. समरी की स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है. आप एकदम समरी लिखना शुरू कर दीजिए. अब समरी कैसे शुरू करनी है, पैसेज का थोड़ा सा हिंट ले लीजिए. फर्स्ट सेंटेंस पढ़ लीजिए, उससे थोड़ा आपको हिंट मिलेगा. हिंट मिलते ही आप समरी स्टार्ट कर दीजिए. उसके बाद पैसेज को इग्नोर कर दीजिए. फिर ये जो पॉइंट्स आपने बनाए हैं, इन पॉइंट्स के बेसिस पे आपको समरी लिखनी है. समरी लिखते हुए ध्यान रखिए, आपको कोई एब्रीविएशन यूज नहीं करनी है समरी. अगर टाइटल 3 मार्क्स में पूछा गया है बी पार्ट में, तो समरी कंप्लीट होने के बाद आप टाइटल लिखेंगे. ये 3 मार्क्स में होगा. जैसे मैं आपको बता चुका हूं, बहुत क्रिएटिव एक्सरसाइज है. अगर आप इसको अच्छे उससे करेंगे तो फुल मार्क्स मिल सकते हैं. अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं. कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं पहले ही बता चुका हूं. अब मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दूंगा, उन्हें समझिए. रिड्यूस द अंडरलाइंड इम्पॉर्टेंट सेंटेंस इनटू अ पॉइंट. जो सेंटेंसेस या सेंटेंस आपने अंडरलाइन किए हैं, अब उन पे पॉइंट्स बनाएंगे. सेंटेंस को हमेशा, या पार्ट ऑफ द सेंटेंस को आप उसको पॉइंट में रिड्यूस कीजिए, तो एक अच्छा पॉइंट बन जाएगा. ये हमेशा ध्यान रखिए. नेवर बिगिन द पॉइंट यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरीज एंड मेन वर्ब्स. Is, are, am, was, were, has, have, had. Right? Modal auxiliaries. I will not pronounce modals. Can, could, may, might, should, must, ought to. Right? Used to, have to. No.
and other main verbs telling tense और tenses. अगर आप ये यूज करेंगे तो आपने प्रेडिकेट लिख दिया, प्रेडिकेट कभी भी पॉइंट नहीं होगा. पॉइंट हमेशा 3-4 वर्ड्स का होना चाहिए, जितना छोटा होगा उतना ठीक होगा, लेकिन उसका रिलेशनशिप सब हेडिंग से होना बहुत जरूरी है. ये नहीं कि सब हेडिंग कुछ और कह रहा है, पॉइंट कुछ और बता रहा है, तो इसका मतलब वो पॉइंट्स और गलत हैं. आपके पॉइंट्स सब हेडिंग से रिलेट होने चाहिए, उनकी रिलेशनशिप होनी चाहिए, वो रिलेशनशिप मीनिंगफुल होनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है यूज रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशंस. आप जो एब्रिविएशंस यूज करेंगे 4 करनी है मिनिमम, 5-6 बना लीजिए, ज्यादा मत बनाइए, टाइम वेस्ट होगा. एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया है, दिस पॉइंट. ट्राई टू बिगिन द पॉइंट विद एन एडजेक्टिव और नाउन और बोथ ऑफ इफ पॉसिबल. हमेशा पॉइंट को बनाते टाइम ध्यान में रखिए कि नाउन से शुरू करिए या उससे पहले एडजेक्टिव ले लीजिए, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करेगा, उसके मीनिंग को थोड़ा सा और यानी वेट देगा. या दोनों यूज कर सकते हैं. अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, वोकैबुलरी अच्छी है, तो आप इसको कर सकते हैं और आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. ये बहुत जरूरी है. इसीलिए इसी तरीके से आप इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव और कोई मेन वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरीज अवॉइड कर सकते हैं. देयर आर 2 ways ऑफ मेकिंग एब्रिविएशंस. आप देखिए जितने स्टूडेंट्स को कि वे सोचते हैं कि एब्रिविएशंस कैसे बनानी है, इसके 2 वेज हैं, 2 मेथड्स हैं. पहला, टेक द फर्स्ट फ्यू लेटर्स एंड द लास्ट 2 or 3 letters ऑफ द वर्ड जिसकी एब्रिविएशन आपने बनानी है, जॉइन देम. फॉर एग्जाम्पल ब्रेथ है, ब्रेथ में बी आर पहले ले लिया आपने 2 लेटर्स, फिर आपने टीएच ले लिए 2 एंड के और दोनों को जोड़ दिया, तो क्या बन गया, बी आर टी एच. ये एब्रिविएशन बन गई. ये नहीं करेंगे एक लेटर ले लो एक छोड़ दो, एक ले लो एक छोड़ दो, नहीं, गलत है. एक्सप्रेशन EXPR, ये लेटर्स बिगिनिंग से हो गया, एंड से हो गया, EXPRN एब्रिविएशन बन गया. ये पहला मेथड है. दूसरा है टेक ओनली फर्स्ट फ्यू लेटर्स ऑफ द वर्ड. फॉर एग्जाम्पल इंथुजियास्टिक, इसके 5 लेटर्स ले लिए, ENTHU, ये एब्रिविएशन बन गया इंथुजियास्टिक का. राइट नाउ यूज. तो दीज आर द 2 ways जो आपको ध्यान में रखने हैं. एब्रिविएशंस बनाते टाइम इस तरीके से बनाइए. यूज ये यूनिवर्सल एब्रिविएशन सच एज UNO फॉर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को एटसेट्रा, सार्क एटसेट्रा. आई मीन use universal symbols like less than, greater than, is equal to, that is, at the rate of, and etc. When you use them, you will have to mention these abbreviations or symbols in your key to abbreviation. उसमें mention करनी है ये, लेकिन समरी में यूज नहीं करेंगे इसे. ये बिल्कुल, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि वो समरी में यूज मत कीजिए. लास्ट पॉइंट है अवॉइड एग्जाम्पल्स, रेपिटेशंस एंड अननेसेसरी फिगर्स. राइट, उन्हें अवॉइड करना है. एक चीज और ध्यान में रखनी है, जो कि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस आई कुड नॉट मेंशन, जो मैं नहीं बता सका. पॉइंट्स की जो वर्ड लिमिट है, आप उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि वो 70-75 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इससे ज्यादा वर्ड्स नोट मेकिंग में नहीं होने चाहिए ए पार्ट में. अगर आप 100 या 125 वर्ड्स ए पार्ट में यूज करेंगे पॉइंट्स बनाते हुए, तो समरी तो 80 में नहीं आएगी. 80 वर्ड्स में आपको समरी लिखनी है, तो वो बहुत ऊपर चली जाएगी 80 वर्ड से, और आप मार्क्स लूज कर देंगे. तो दिस इज द वे हाउ टू डू अ गुड नोट मेकिंग. अब आप इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, तो एक अच्छी नोट मेकिंग कर पाएंगे. आई होप
You have understood it very well. Now, I think you will not find any difficulty in doing a good note making. Here is an example of a note making telling you how it is to be or should be done. I have already explained you the points. Now you have to understand this example on the basis of those points. I will keep telling you, you just listen to what I say attentively. First, A part, as you know, there will be two parts in this question. In A part, you will write title here. For example, character education. Subheading 1, character education. I have made the abbreviation of this character 6 letters from the beginning of that word character. That is the abbreviation of character. Education, EDU. Edu. I have taken first 3 letters of education. Now, point number 1, point number 2, point number 3, you will have to leave this much space, right? You will not start writing points exactly below under 1. See, development. I have made the abbreviation of development, DEVEL, from the beginning, T from the end. Join them. Development of moral strength, development of spiritual well-being. This is point number 2. Point number 3, core of GEP. Now, first subheading is complete. Now come to the second. What is character? Sign of interrogation. Point 1, need of a rock-like foundation. Point number 2, form steady and humanistic behavior. This is point number 2. You keep leaving one line in between. And now, see what I have explained to you previously. I have not started any point with verb or modal auxiliaries or any main verb indicating any tense. No, never use. Development noun, core noun, need noun, form adjective, steady adjective, humanistic adjective, and this is behavior noun. So with the help of nouns and adjectives, you can make very good points. Always avoid helping verbs, modal auxiliaries, and main verbs. If you write them, if you begin your point with these things, so you are writing the predicate in half of the sentence. No, that will not be a point. Third, education for character. Point 1, training of mind, training noun. Second, learning to do good. Learning, this is your non-finite, right? So 1, 2, 3, and this is 4. They should come in one straight line, right? You have to maintain that symmetry, right? Similarly, you have to maintain the symmetry of this point. So 4th point, subheading, requisites for character education. Now first point, healthy body of the learner. Second, healthy mind, essential for self-discipline. Third, complete integration of body, mind and soul. I have made the abbreviation of integration, INTEG, from the beginning and from the end of this word and join them. This has become the abbreviation, right? Again, adjective, 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 right? Now come to
subheading number 5, Gandhi's theory of education. Right? Point 1, need but not greed. Need, again your noun, building of nation through character. Second point, building, again noun here. Right? So, this is the way you have to make subheadings, these subheadings, right? And these are the ways to make points. So this is the linear chart, and you keep leaving one line in between. For subheading, points, leave one line. Second subheading, make points and leave one, in this way. When this notes in points are complete, then you will make this box for key to abbreviations. Now you have to keep one thing in your mind. This box should not be exactly below this, right? Suppose these subheadings are points, they come like this, then in the center of your answer sheet, make this key to abbreviation. Not exactly below these subheadings and points. Now key to abbreviations, character for this, right? In order. You will give these abbreviations in order, The order in which you have made at the time of making these points, making these notes. So, character, then education, development, like this development, GEP, Gandhian educational program. Right? So this is then integration, this one, right? And this is your, and where it is and for this, and, right? So this is the way you have to make this note making, right? Now A part is complete. Now you come to the B part. B part may you have to write the summary. Right? Don't write this spelling summary. No, don't write. Start writing summary straight away. And how to start? You just take a cue. Right? Character, education is the development of moral strength, and spiritual well-being. Look, you have got the cue from these points. So this is the way how to start writing your summary. So if your subheading is correct, points are correct, then there will be no problem in writing your summary on the basis of those points. So this is the way a note making should be done. यहाँ नोट मेकिंग का एक उदाहरण है जो उन्हीं पॉइंट्स पर आधारित है, जो पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए नोट मेकिंग की है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस थ्रू दिस एग्जाम्पल हाउ अ गुड note making should be done. Now, as you know, I have already told you that there will be two parts in this question. दो भाग होंगे, एक A और B. A में आपको notes बनाने हैं in the form of points, right? पहले write A part. You will not write this note making. Title, character, education, for example. Right? If title is asked in A part, अगर title को A part में पूछा गया है और 5 marks में include है तो आप title यहाँ लिखेंगे। First subheading डालिए आप, फिर character education, character की abbreviation, education की abbreviation, character के पहले 6 letters हैं, edu में 3 है,
जो 2 वेज मैंने बताए थे, 2 मेथड्स हैं एब्रीविएशन बनाने के, इतनी स्पेस छोड़िए आप। फिर पॉइंट 1 2 3 डेवलपमेंट, अगेन एब्रीविएशन DEVELT, 5 letters from the beginning, 1 from the end, join the abbreviations. This will become your abbreviation. Similarly, development of spiritual well-being, core of GEP, right? Leave one line blank, subheading 2, what is character, right? Point 1, need of a rock-like foundation. Second, firm, steady and humanistic behavior. See, I told you, always try to begin your points with noun, adjective or both. See here, noun, 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 right? Noun, adjective, 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 noun, right? Subheading 3, education for character, training of mind, noun, learning to do good, right? Learning, this is your present participle, non-finite, ठीक है? Leave one line blank, subheading 4, requisites for character education, healthy body of the learner, healthy mind, essential for self-discipline. Third है complete integration of body, mind and soul. Integrations, abbreviation, INTEG, from the beginning and from the end, join them. This has become your abbreviation of integration. ये उसकी बन गई, right? ये end का क्या आ गया हमारा? Universal symbol. Fifth subheading, Gandhi's theory of education. Point 1, need but not greed, noun, noun, building of nation through character. Present participle working as a noun here, right? You can say gerund. Now, this is the way to make notes in the form of points, I mean. So, you have to maintain this symmetry, right, of subheadings, and you will maintain the symmetry of the point sign. This is very important. Okay. Once this point making business is complete, then make a box. Not exactly below. इसके एकदम नीचे नहीं बनाएंगे आप थोड़ा सा सेंटर में लेंगे बॉक्स को, ठीक है? जो आंसर शीट होती है थोड़ा सा सेंटर देखिए आप, राइट? ऊपर लिखेंगे की टू एब्रीविएशंस, राइट? फिर यू विल mention these abbreviations in order. The order in which you have made these abbreviations at the time of making your notes. Pehla character, then education second, development third, GP fourth, integration fifth, then universal symbol and end. Mention in order. Order में mention करेंगे. ये आपका A पार्ट 5 मार्क्स का कंप्लीट हो गया. अब आइए B पार्ट पे. B में समरी देनी है. समरी की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे आप. Straight away you will start writing summary. If title is asked in B part, the title is to be given. ठीक है? यानी write a brief summary of the passage in about 80 words and give a suitable title to it. Then you will write, when summary is complete, you write the spelling of title here and give the title here. Now how to start this summary? Okay, you can take this cue. Character education is the development of moral strength and spiritual well-being. So this has become your beginning. इस तरीके से आप शुरू कर दीजिए and complete the summary on the basis of these points. You will be able to make a very good note making. इस तरह आप बहुत अच्छी note making बना पाएंगे. मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से ये explain कर दी है. आप इसको देखिए, समझिए. एक अच्छी note making करेंगे और बड़ी creative exercise है. You will enjoy doing this note making and you will get full marks if you do it correctly,
neatly without any overwriting and scratching. So I have completed this note making part also. Dear students, I hope you must have found this video meaningful. If yes, like and share it. Please don't forget to hit the button subscribe. Make sure that you press the bell icon on all so that you could never miss an update.